हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ग्रामर चैनल। और आज सीखेंगे हम नेगेटिव टू अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव टू नेगेटिव जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो। ये क्वेश्चन हर बार नहीं आता, लेकिन वो कब आएगा दैट इज अनसर्टन एंड वी हैव टू लर्न इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके फ्रेंड्स 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं तो उनको भी बताइए सेक्शन सी के बारे में। जो सारे वीडियोस है ग्रामर के वो पूरे हिंदी में बन रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो नेगेटिव टू अफर्मेटिव, सो दीज आर द वेज। ये इतने तरीके हैं। जैसे फर्स्ट वन इज यूजिंग एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट वर्ड का यूज करके हम उसको नेगेटिव अफर्मेटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। देन चेंज द डिग्री, रिमूव और यूज टू, यूज और रिमूव, अनलेस, यूज ऑफ कैन और एबल, कैन, कुड, is able, was able, use of hardly, use of avoid, fail, use of refrain. So ये सारे जो तरीके हैं, these are the ways to convert affirmative to negative and negative to affirmative. Okay, so let us see with some examples. हम इसको एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, टेक्स्ट बुक के सेंटेंस के साथ। ओके, सो स्टैंडर्ड 10 का ये जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका लेसन 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। और उसके सेंटेंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अगले सेंटेंस देख के आपको बोलेंगे टर्न इनटू अफर्मेटिव। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। तो आप इसका यूज कर सकते हैं एंटोनिम का, जो यूज एंटोनिम। तो ऐसे करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस तरह से कि आई वॉज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल हो जाएगा आई वॉज माइंडफुल। दैट इज वेरी सिंपल। In the beginning there are simple things, but when we go ahead it will become harder. Now see here, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अब ये सेंटेंस आपको दे और बोले टर्न इनटू नेगेटिव, तो आप कैसे करेंगे? सो यहाँ पे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड डिडंट फेल टू क्रिएट, जो यहाँ पे लेट मी कॉपी इट एंड वी विल सी इट हाउ इट हैपेंस। Okay, now see how we transform this from affirmative to negative. The T must be capital. The policy of apartheid didn't fail to create. Okay, then what your sentence is there? So the policy of apartheid didn't fail to create, ये हो गया नेगेटिव। दूसरा तरीका है the policy of apartheid didn't refrain from creating a deep and lasting wound. Okay, so didn't fail to create, एक बात ध्यान रहे, जो टू होता है तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फेल टू क्रिएट। और जब रिफ्रेन यूज करते हैं तो रिफ्रेन के बाद ऑलवेज फ्रॉम यूज करते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग। रिफ्रेन मतलब टू स्टेप बैक, कुछ करने से पीछे हटना, मींस डिडंट रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग, मतलब वो क्रिएट करने से पीछे नहीं रहा, उसने क्रिएट कर ही दिया। सो दीज आर द टू possible answers of this same question. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Okay, let us see the second example. Yes, each man is able to fulfill those obligations. Now very simple sentence and you can do it easily. Each man is able to fulfill those obligations. So is able to मतलब वो कर सकता है, so we can take opposite of able. Okay,
इसमें इज नॉट अनेबल टू फुलफिल, तो इजीली यहाँ पे एबल का अनेबल करेंगे, इसका इज नॉट करेंगे, हो जाएगा. इट इज वेरी इजी, आई एम नॉट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड. नेक्स्ट, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन. सो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट मींस इट वाज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर भी एंटोनिम लेंगे ऑपोजिट, तो हो जाएगा नेगेटिव. ओके. बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. या, सो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो उसका अफर्मेटिव करना है. बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर अंडर स्लेवरी. बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये फ्री जो है, वर नॉट फ्री, उसका ऑपोजिट वर अंडर स्लेवरी. वो आजाद नहीं थे, वो गुलाम थे. वर स्लेव्स, वी कैन राइट दैट. बट माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर स्लेव्स, तो ये फ्री का ऑपोजिट स्लेव हो गया. सो ऑपोजिट यूज किया हमने, इसका नेगेटिव का अफर्मेटिव हो गया. नाउ लेट अस सी मोर सेंटेंसेस. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. तो अभी इसके पहले के वीडियो में हमने इफ का अनलेस यूज करना सीखा था, जिसमें यही पॉइंट था कि जब इफ वाले सेंटेंस में से हम इफ हटाकर यहाँ पर ये जो इफ दिया है और अनलेस यूज करेंगे, तो स्टेटमेंट इफ वाला अफर्मेटिव का नेगेटिव बनता है, तो उसका सामने वाला स्टेटमेंट हमको उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी शो यू हाउ इट हैपेंस. सो उसके जो पहले वाला जो था हमारा टॉपिक, और उसमें हमने जो सीखा था वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है. यस. ओके. सो इफ आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ, सो इफ वाला स्टेटमेंट जो है, ये क्लॉज है, वो अफर्मेटिव है. और यहाँ पे हम अनलेस यूज करेंगे, तो ये जो नेगेटिव है आई एम नॉट, वो हो जाएगा अफर्मेटिव. द आंसर विल बी लाइक दिस. आई एम truly free unless I am taking away someone else's freedom. Full stop. So if और unless का जो यूज हम सीख रहे थे, वो यहाँ पर हमको यूज करना है, काम में लेना है. Just a minute, let me remove this box. Okay, yeah. तो ये नेगेटिव का हो गया अफर्मेटिव, और ये अगर अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव से करेंगे. अगर ये सेंटेंस दिया है और बोले कि टर्न इनटू नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे टर्न इनटू नेगेटिव, तो ये आंसर लिखेंगे. अगर ये क्वेश्चन दिया है बोलेंगे टर्न इनटू अफर्मेटिव, तो ये आंसर लिखेंगे. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. We will go to now next chapter. Let me bring it down very fast. Yes. Lesson number 2. Sorry, it is the from the first flight, lesson number 3. He had been afraid to fly with them. So he had been afraid. Now he hadn't been courageous. So afraid का opposite हमने courageous ले लिया, तो आंसर हो जाएगा. He hadn't been courageous to fly with them. Now let us see the next sentence. Since then, nobody had come near him. So since then, everybody remained away from him. Nobody, negative sentence है. Since then, everybody remained away from him. Since then, everybody avoided to come near him. So avoid का use कर सकते हैं हम. Okay. Still they took no notice of him. तो ये नेगेटिव है, तो उसका अफर्मेटिव करना है. Still they took no notice of him. Still they avoided taking notice of him. Still they failed to take notice of him. Still they refrained from taking notice of him. And still they unnoticed him. Only his mother was looking at him. Okay. No other than his mother was looking at him. तो इसका नेगेटिव हो गया. Next sentence. He could hear nothing. नेगेटिव है. Okay, तो उसका अफर्मेटिव करना है. So he failed
to hear anything. He refrained from hear anything. Okay, he was not able to hear anything. So ये could का हमने able किया past तो was, he was not able to hear anything, he failed to hear anything. तो ये negative का affirmative हो गया. Now he was no longer afraid. Again negative है, उसका affirmative करना है. Okay, so uh, he was brave now. He was courageous now. He was no longer afraid means वो भी डर नहीं रहा था, means वो brave था. उसका antonym लेंगे. Next, he had made his first flight. Okay, so he hadn't failed in making his first flight. He hadn't refrained from making his first flight. So in this way हम इसका ये नेगेटिव कर सकते हैं. जो नेक्स्ट लेसन है उसके अंदर जो हम सीखे थे लास्ट में, डिग्री चेंज करने से किस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव बनता है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. यस, ओके. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. तो ये हम सीख चुके थे चेंज द डिग्री के अंदर. आप देख लेना, ये सेंटेंस का एग्जांपल होगा. तो ये पेपर एंड पीपल जो कंपेयर थिंग्स है उसका एक्सचेंज करेंगे. तो पीपल डोंट हैव एज मच पेशेंस एज पेपर. सो यहाँ पे पेपर हैज लेकिन पीपल डोंट हैव लिखेंगे, डिग्री चेंज करेंगे तो अपने आप नेगेटिव बन जाएगा. ओके, उसके बाद था रिमूव टू. तो रिमूव टू वाला एक सेंटेंस था वल्ली वाले लेसन में. हम देखते हैं वल्ली के लेसन में रिमूव टू करेंगे तो भी स्टेटमेंट नेगेटिव बन जाएगा अगर वो अफर्मेटिव है तो. यस, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन टू देम. तो यहाँ पे लिसन टू देम पीछे नहीं लिखा है बट वी कैन ऐड इट. और एग्जाम में ऐसा नहीं होगा वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, पीछे कुछ ऐड किया होगा. ओके, सो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन टू देम. तो ये टू रिमूव करेंगे. वल्ली वुड बी सो जेलस दैट शी वुड नॉट लिसन टू देम. तो यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएगा. There is one more example of changing degree in this same chapter. Let us see it. Yeah, let me scroll it down first. Yes, it is here. This is as far as your 30 पैसे takes you. Now, as far as positive degree. जब डिग्री चेंज करेंगे तो अपने आप नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. Means your 30 पैसे can't take you farther than this. ये हो गया, चेंज द डिग्री किया तो अपने आप वो सेंटेंस नेगेटिव बन गया. ओके, सो टर्निंग टू नेगेटिव करने के लिए ये जो तरीके हैं, these are the ways. We can use antonym means opposite word. We can change the degree. Remove to, use to. Remove unless, use unless. Can, able, is able, was able, could. You can hardly, avoid, fail, refrain. Okay, so you can make your notes while you're watching this video. You can pause the video, you can write the notes, you can take the screenshot.